Hello students. Finally, after a lot of delay, lot of news items and the humbug of elections, ultimately NCERT has published the long-awaited book, the Social Science Textbook of Grade 6. ये किताब कल ही publish हुई है and I got one of the first copies. Its title is Exploring Society, India and Beyond. अब we know that revision of textbook is a very political hot potato. Every time, whenever there is any attempt by any government to change anything in the textbook, तुरंत politics शुरू हो जाती है. They want to shape the mind of the generation. उनको culturally influence करना चाहते हैं and what not. Especially the most debatable aspect is history. It's hottest of the political potatoes to manage. तो जैसे किताब हाथ में आई, I wanted to immediately see कि भाई इसमें हिस्ट्री में क्या हुआ है. अखबार में कई सारी खबरें तो पिछले 8-10 साल से चल रही है. एनसीईआरटी चेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया. बट दैट ऑल द पास्ट न्यूज वाज प्राइमरीली रिगार्डिंग टिंकरिंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक्स. लेकिन ये किताब तो ब्रांड न्यू है, कम्प्लीटली फ्रेश है. तो इसमें क्या होगा? तो आज के वीडियो का एजेंडा ये है कि नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल डिस्कस इज दिस बुक अ राइट विंग बुक और इज दिस समथिंग एल्स. थोड़ा सा यूपीएससी सीएससी के परे जाके ये अलग वीडियो है. सो दिस वीडियो माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, बट दिस विल very much enrich your understanding of history and textbook writing both. At the outset, let me tell you that I do not believe in right wing, left wing as templates. They are inapplicable to India. They are cultural outcome, the historic outcome of some context which is in Europe. अब यहाँ इंडिया में उसको आप कैसे लागू करोगे? आप बताओ, महात्मा गांधी जी राइट विंग थे कि लेफ्ट विंग थे? वो दोनों भी थे और दोनों भी नहीं थे. सेम इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लीडर. तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंडिया में उतना लागू डायरेक्टली नहीं होता है. सो वी विल बी यूजिंग दिस कैटेगरीज ऑफ राइट एंड लेफ्ट ओनली फॉर द नेम से, क्योंकि इस्तेमाल करने में आसानी है. इसलिए नहीं कि वो टर्म सही है, वो फॉल्टी है. एक्सेप्टिंग दिस, let us move ahead. What I will be doing in next few minutes is talk about 8 major points जो कि आरोप लग सकते हैं इस किताब पे कि ये एजेंडा ऑफ सेफ्रनाइजेशन को एडवांस करता है. दिस बुक इज एक्चुअली पेंटिंग हिस्ट्री इन राइट विंग और नॉट. उसके लिए 8 मुद्दे हैं. आई डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर, एंड टॉक अबाउट वेदर इट इज ट्रू और नॉट. मजा आएगा. पहला है increased cultural context everywhere. We know that knowledge is one. There is unity of knowledge. हम अपने आसानी के लिए उनको बांटते हैं. This is history, this is geography, this is polity, economy. Ultimately, in reality, it is all one and the same. It is all homogeneous. तो ये aspect is very much visible here. That in geography, in economy, in society, in governance, wherever you go, there are umpteen number of cultural references. And which kind of cultural references that you can think of? You can find here Aryabhatta. You can find some Ujjain meridian, the Rekha, Madhya Rekha from ancient Indian culture. You can find Atharva Veda's Bhumi Sukta. And all of that is there in the geography section. But this is not only Brahmanical culture. You see, in the very same chapters of geography, they have also mentioned Sangam literature, the Thinai classification of landforms and life forms and culture, the eco-zones of Sangam are also given an example. तो इसको तो मैं Brahmanical right wing नहीं कहूँगा. What I can call, at least for this आरोप, for this charge, that this is more culturally rooted. What it tries to convey is that this kind of rational thinking, this kind of classificatory mechanisms, this kind of organization of knowledge did not start with the arrival of Europeans. India already had a very long tradition of such kind of sciences. इस point में कुछ गलती नहीं है. This is not right wing agenda, at least as far as this आरोप is concerned. The same thing you can see also in other section, time and sources in history. यहाँ भी पूरी कोशिश वही की है कि we accept the modern calendar of BC and AD, but we should know from where it is coming. It's a very specific calendar rooted in West, not only in West, in Christianity.
तो जिसको हम ज़ीरोथ ईयर कहते हैं वो तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, बट उसको इतना रिजेक्ट नहीं किया है। दे आर नॉट सेइंग कि भाई उनका है मत यूज़ करो, दे आर नॉट एट ऑल कमेंटिंग दैट, व्हाट दे आर सेइंग इज अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। एंड यू ऑल्सो शुड एक्सेप्ट कि हर कल्चर में अपने अपने तरीके होते हैं कैलेंडर बनाने के, जैसे कि इन केस ऑफ इंडिया यू हैव पंचांग। सो ये कल्चरल रूटेडनेस, कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर ओन ट्रेडिशन, एंड द सेम टाइम वी शुड एब्सॉर्ब, वी शुड एक्सेप्ट वेस्टर्न, मॉडर्न एंड रैशनल कॉन्सेप्ट। इसमें देर इज नो इनहेरेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग हियर। इट इज नॉट, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट आरोप, it is not a right-wing agenda, it is more of cultural rootedness and quite a welcome. Now come to the second arrow. Second arrow is about use of Sanskrit quotes. Her chapter starts with some quote, some quotable quote of some great author or thinker or thought leader. You have, for example, the quote of Aryabhatta, quote of Aurobindo, quote of Vivekananda or Kautilyan Arthashastra. All these people seem to be talking in Sanskrit or English, but primarily from Brahmanical sense. तो क्या ये सही है? Well, it is not entirely true, because you look at all the chapters in this book and the book on science also, curiosity, you come to know there is actual diversity of sources from where quotes are picked up. We have quote by Tagore, nowhere a right person read Gare Baire. You have quote from some authors like Jules Verne. We have quote by E.H. Carr in the very first chapter of history. We have quote from Tinai, as I said, Sangam literature. We have also quote from Tirukkural, and also in science book a quote by Kabir. They have used various scripts, various languages and various cultural ideas. तो यहाँ पे on the second chart that this kind of quotes promote some Brahmanical right-wing culture, ये भी disprove होता है. So ये दो आरोप पहले वाले ना बड़े आसान थे, cultural rootedness and quotes of Brahmanical origin. अब यहाँ से आगे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. लुक एट द थर्ड आरोप. तीसरा आरोप है द चैप्टर दैट इज गिवन देयर, इंडिया दैट इज भारत. अब ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया दैट इज भारत, एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली आई थिंक द आउटकम ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंकिंग ओनली. आज से 1.5-2 साल पहले दिस यू कैन सी द चैप्टर हियर, इंडिया दैट इज भारत. This debate had started. Even I have made a video of about half an hour, which you can find on the Level Up IAS YouTube channel. कि इंडिया का नाम क्या था, कैसे था, कब. So this chapter is very interesting. When I started reading the chapter, I expected it to be very controversial, but it is not. It is not. You see, in the first half of the chapter, they are talked about what was India's name, or what were India's names in ancient time kept by Indians. जैसे कि they quote Vedas, Ramayana, Mahabharata, Ashoka's edicts, and also Sangam literature, and come up with various names like Sapta Sindhu region. We have terms like Jambu Dvipa, which found in Ashokan edicts, Bharatvarsha, etc. So इसमें diversity of names, it's about diversity of your own identity. In the second half of the chapter, it is mentioned that what different names were given to us by the foreign travelers. India was never isolated from the world. It was not much inward looking. For centuries we have been going out, outsiders have been coming to India. So different names are given to India by outsiders. तो ये शब्द जैसे हिंदू है, इंडिया है, these are terms not our terms given by outsiders. तो ये ठीक है, इसमें factual incorrect तो कोई बात है ही नहीं. They also talk of a word called Tianzu. एक वर्ड शेंडू भी होता है, वो इसमें मिसिंग है, बट तियानजू दिया हुआ है फ्रॉम द ईस्ट एशियन पॉइंट ऑफ व्यू. सो अलग अलग नाम दिए हैं. तो एज फार एज द फैक्ट्स आर कंसर्न, देयर इज नॉट मच अ प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू डिग फॉर राइट विंग एजेंडा, तो यहाँ पे एक बात आएगी, वो ये है, देयर इज एन इनहेरेंट असर्शन, इनहेरेंट implied rather assertion कि इंडिया वॉज ऑलरेडी कल्चरली यूनाइटेड इन एंशियंट पास्ट, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. And for that they have talked about how India is seen in Sangam literature. So at least as far back as Sangam era, there is already a cultural concept of entire Indian subcontinent as one. ये उनका assertion है, and this point is clearly थोड़ा सा right wing. But there is also the other point which is not right wing at all, और वो है that we study, that is Orientalism.
हम पढ़ते हैं मिशन फूको, नॉलेज पावर कॉम्प्लेक्स, हम पढ़ते हैं एडवर्ड सईद एंड ओरिएंटलिज्म, तो वहाँ पे यू कैन ईजिली सी दैट डिफरेंट पावर्स impose their cultural idea, they define the stereotypes of yourself, they define your own identity, and that is clearly visible here. So as far as this implied idea of cultural unity in ancient past is concerned, it seems to be right wing. At the same time, the implied idea कि हर चीज़ के अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं, some of your own, some from outside, and outside ones may not be always very neutral, they come with some power complex, they come with some kind of imperial notion perhaps possibly, तो वहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, and it is not right wing thing. तो एटलीस्ट ये दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 50-50 वाली चीज़ हो जाती है. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव माई पर्सनल 3 कंप्लेंट्स अबाउट दिस चैप्टर इंडिया दैट इज भारत. पहली बात तो you may mention Bharatvarsha etc., but you know, for the first time, when is the Bharatvarsha occurring in the history of India? The oldest inscriptional reference to the word Bharatvarsha is found in Hathi Gunfa Edict in Odisha. That is not mentioned in this chapter. वो थोड़ा mention मेरे ख्याल से करना चाहिए था. वो important fact है, relevant fact है, central fact है rather. The second point is that the conclusion of the chapter is not very clear. हमने जो बात करी अभी implied cultural unity और implied orientalism, ये सारा हमारा समझ है जब हम इतने साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. But a student in 6th standard and a majority of teachers across Indian schools, they might be left hanging in between कि भाई कहना क्या चाहते हो, मुद्दा क्या है बताओ इस चैप्टर के एंड में. Lots of facts are given, but ultimately what is the final point you want to make? It is not clearly mentioned. Maybe उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना था, I don't know. थोड़ा सा लगता है कि मूवी है उसका एंडिंग ही नहीं है. एंड तीसरी बात है कि एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर यू सी यू हैव कोट बाय श्री औरोबिंदो, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between Himalayas and the 2 seas. So they want to talk about spiritual cultural unity of India since ancient time, but except for one stray reference of Sangam literature, this chapter does not prove that. So यहाँ पे at least in this chapter this quote is again somewhat inadequately proved. ये proof कब होता है? In much later chapter ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तब जाके वो लूप क्लोज होता है माइंड में. तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इशू, बट माई मेन प्रॉब्लम वुड स्टिल बी हाथी गुम्फा को आपको मेंशन करना चाहिए. बट एज फार एज द राइट विंग एजेंडा इज कंसर्न, एटलीस्ट ऑन दिस आरोप इंडिया दैट इज भारत, आई वुड स्टैंड 50-50, नाइदर राइट विंग कंप्लीटली नॉर एंटी राइट विंग कंप्लीटली. ये थोड़ा सा इट स्टीयर्स क्लियर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी बट पिक्स अप द थिंग्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आइटम. दिस इज द जजमेंट ऑन द थर्ड आरोप. Now come to the most controversial aspect of this book, and I am sure कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत वीडियोस बनेंगे, इस पर बहुत अखबार में न्यूज़ आएगी, कंट्रोवर्सी छिड़ेगी, बड़े बड़े लोगों के कोट्स आएंगे. हो सकता है मुद्दा आगे भी जाइए, एंड दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम खारिज करके दे हैव केप्ट सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. अब वी नो दैट इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. एक्चुअली ये टॉपिक जो है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें 2 कंट्रोवर्शियल पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज मच मोर कंट्रोवर्शियल, व्हाट टू नेम इट, शुड इट बी कॉल्ड एज सिंधु सरस्वती और नॉट. और दूसरा थोड़ा सा लेस कंट्रोवर्शियल, द कल्चरल कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. दोनों की बात करते हैं एक एक करके. पहला मुद्दा है व्हाट शुड बी द नेम. वी नो व्हेन वी रीड आवर टेक्स्ट बुक्स, आवर क्लास नोट्स, यूपीएससी का कोचिंग मटेरियल और इवन भूपिंदर सिंह, there is a clear solution to the problem कि Indus Valley नाम खारिज करना चाहिए, because lots of sites are found outside Indus Valley also, so it is no more one river civilization, so this name is outdated. Clearly there is no controversy. यहाँ भी एक बक्सा दिया हुआ है कि ये नाम बेकार है, हटा दो इसको. Maybe in 1920s it made sense, in 2020s it does not make sense. यहाँ पे no controversy. अब फिर उसके बजाय क्या नेम ले आए, what other name should be given to it? Debate is there. Here we have 2 candidates. One is a candidate that is very scientific, rational, that you go by the first type site Harappa, so Harappan civilization. And second is that you go by Indus Saraswati civilization.
तो हड़प्पा वाला भी नेम इज लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड इवन इन दिस बुक एट मल्टीपल प्लेसेस दे इंटरचेंज, दे समटाइम्स यूज हड़प्पा, समटाइम्स यूज इंडस सरस्वती। तो हड़प्पा के बारे में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन द बुक ऑफ साइंस यू विल सी that there is named Indus Saraswati in the bracket, which is also known as Harappan civilization. तो हड़प्पा के बारे में it's a neutral name, everybody agrees to it. But जो दूसरा नाम है इंडस सरस्वती, कंट्रोवर्सी वहाँ पे। The very first quote of the book, quote of the chapter here, is given by B.B. Lal. The most ancient civilization of India, known variously as the Harappan, Indus or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. एक तो उन्होंने बीबी लाल का कोट डाल दिया। वेल, एज फार एज द आर्कियोलॉजी इज कंसर्न, देयर इज नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट, बट वी नो दैट ही इज फेमस फॉर मल्टीपल थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही ट्राइड टू फाइंड आउट द जियोग्राफी ऑफ महाभारत एंड रामायण through archaeology of Mahabharata and Ramayana rather. Secondly, he was therefore shunned by Marxists, and he also stood against Marxist historians in the case of Babri Masjid. And thirdly, he has written a book about the origin of Aryans, where he veers towards understanding that there was some kind of unanimity, equality between Hadappans and Vedic Aryans. शायद वो एक ही लोग थे. तो एटलीस्ट ऑन दिस इशू बीबी लाल के कोट से चैप्टर की शुरुआत करना मतलब यू हैव टेकन क्लियर स्टांस इन अ वे. एंड आई ऑल्सो कुड सी इन द नेम्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द बुक, यहाँ पे नाम है, एक नाम आता है मिशेल डैनिनो सर का. Now Michel Danino himself, I think, is involved as a visiting professor of IIT Gandhinagar as one of the authors of the book. And we know that Michel Danino sir has written a book, The Lost River. And there also the stance is that जो घग्गर हाकरा नदी है, that nadi is nothing but Saraswati. And that stance is also clearly visible in the chapter. It is said कि जिसको हम इंडिया में घग्गर कहते हैं, पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं, और जो आज के दिन में सूख गई है, इट्स अ ड्राइड रिवर. At one point of time, there were hundreds of cities and towns on its bank, and that river was called Saraswati. अब ठीक है, कुछ तो नाम होगा नदी का, नदी थी, सूख गई है, कुछ तो नाम था, यहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट नहीं है. बट was that name Saraswati or not? If you use the name Saraswati for that, the name is coming from Vedic literature, and the sites are Harappan sites. तो अब Vedic sites of Vedic literature, हड़प्पन साइट्स को अगर आप एक साथ में लेके आ रहे हो, अगेन यू समहाउ पॉइंट टुवर्ड्स द आइडिया दैट देयर वाज सम कनेक्शन बिटवीन वैदिक आर्यंस एंड हड़प्पन्स. तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट एंड लेफ्टिस्ट एंड मेनी अदर पीपल विल राइज अगेंस्ट दिस बुक. दे विल से दिस बुक इज कंप्लीटली सैफरन एजेंडा. ये होगा, ये डिबेट आएगा. बट बात ये है कि हम क्या करें एज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज. व्हाट शुड बी आवर स्टांस? हड़प्पा इज द सेफेस्ट नेम, न्यूट्रल नेम, दिक्कत ही नहीं है. बट यू सी नाउ 2023 लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन बाय यूपीएससी इन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1. इन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 द फ्रेज यूज्ड बाय यूपीएससी इटसेल्फ वाज इंडस सरस्वती कल्चरल जोन. They talk about the diversity and other aspects of Harappan civilization, but rather than using the word Harappa, the UPSC itself has used the word Indus Saraswati Cultural Zone, and now that name has also appeared in NCERT. So I think this much of official acceptance is good enough for you to use the term. तो अगर आप हड़प्पा यूज करो तो न्यूट्रल हो. And even if you use Indus Saraswati, I don't think it will be questioned now, because the term is used by UPSC and NCERT both. It has become a formal term for us. Controversy has not died down. क्या हाकरा घग्गर का नाम अभी भी सरस्वती होगा, नहीं होगा? You have lots of debate, but we can use the term safely without waiting for the debate conclusion. And if you don't want to use, you can use the word हड़प्पा, कोई दिक्कत नहीं. So फिर भी मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, दैट द ऑथर्स ऑफ द बुक हैव नॉट सेड दैट वैदिक पीपल्स वेर द हड़प्पन पीपल. वो डिबेट को यहाँ ना टच किया गया है, ना उसको खोला गया है. परहैप्स इन द 6th स्टैंडर्ड दैट डिबेट डजंट मेक एनी सेंस, बट इट मे बी हिंटिंग टुवर्ड्स व्हाट इज गोना कम इन द हायर स्टैंडर्ड्स बुक. 8, 9, 10, 11, 12 में आते आते स्टांस क्या होने वाला है, उसके बारे में ये हिंट तो ज़रूर हो सकती है. The second connected debate about the same chapter of Indus civilization, or rather Harappan civilization,
is about the legacy of Hadappans. Was there sudden decline? We know it was not there. Gradual decline, yes. For what factors? Maybe climate and river capture. But what happened to the people? What happened to the culture? Did it also disappear? We know it did not. Back in the days in 1920s, when John Marshall declared to the world that they have found a new civilization, he had himself pointed out lots of elements of present-day Hinduism being present back in the Harappan religion based on the artifacts. But वो थोड़ा सा एक पुराना व्यू था. Even Michel Danouna sir, who is involved in the committee that made this book, he has used the word proto-Hindu. वो भी चलो एक अपना व्यू है. UPSC itself has asked multiple questions on the cultural continuity and legacy of Hadappans in the post-Hadappan era and modern times. अब उसके बारे में ये किताब क्या स्टांस लेती है? Look at the first page itself. पहले पेज पे जो फोटो है बहुत ही खूबसूरत है of Dholavira. This the north gate entrance to Dholavira's castle area इस नाम से फोटो है. And here they have shown a picture of a route with lot of archaeological remains. और वहाँ पे एक तो औरतें बैठी और खड़ी है of modern time in modern साड़ी. But that साड़ी is actually very ancient साड़ी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कल्चरल कनेक्शन दिखाया है कि वहाँ के लोग, उस ज़माने के लोग और आज के लोग वैसे ही कपड़े, वैसे ही रहना. तो इट क्रिएट्स अ फीलिंग, सम अनकॉन्शियस फीलिंग इन योर माइंड कि परंपरा खंडित नहीं हुई है. Culture and civilization has continued. But when you look at many other photos, you again get the same feeling. You have, for example, a games board, you have weight system, the copper mirror, you have pottery, you have terracotta vessel city, we have comb, we have lots of other things. So items of daily use, the material culture seem to have continued. But not only material culture, if you look at other photos, you see some specific things. We have swastik. We have a woman, a dancing girl, जिसके हाथ में पूरा चूड़ा है. And then you have a small sculpture where a person is doing namaste. So you see हाथ में चूड़ा, namaste करना and swastik. These three are religious symbols. These three are specifically religious things which have continued since then. So what continued? Generally intangible things, but even within intangible, some things were non-religious and some things were religious. So religious continuity of modern day Hinduism, उसका एक root जो है, it has multiple roots, but एक root जो है, it goes back to Harappa. That is their clear assertion. So इसको भी मेरे ख्याल से इतना doubt तो नहीं कर सकते. And that is why I said that the first issue of calling it Sindhu Saraswati may be more controversial. The second issue of cultural legacy is much less controversial. फिर भी यहाँ पे therefore I will again go for 50-50. ये right wing है कि नहीं है. In the first thing it seems to be right wing so far. In the second aspect it's neutral, no problem. Now let me go to another chapter which is written in a very genius way. And that chapter is School of Thought in the Cultural Roots. So एक chapter ये Cultural Roots करके. India's Cultural Roots, chapter number 7. It starts with some Subhashitas and the photos of Rishis and Buddha and Vardhaman Mahavira. It's a beautiful chapter. But इस chapter में इतनी चीज़ें हैं, समझे ना समझे, यहाँ पे you get to see very interesting things. For example, look at the statement made on page number 106-107. It says, experts have proposed dates ranging from 5th to the 2nd millennium BCE for Rigveda. So it is difficult to say when Rigveda was exactly composed, but experts have proposed dates ranging from 5th century, 5th millennium to 2nd millennium BCE. अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, हम जो इतिहास में पढ़ते हैं कि the duration and timeline of composition of Rigveda for us is 1500 BCE to 1000 BC. 500 साल लेके चलते. वैदिक एरा अगर 1000 साल का है, 1500 से 600 तक का, तो within that first 500 years go for Rigveda and second 500 years go for other aspects of Veda, other parts of different Vedas. But यहाँ पे there is a clear assertion that date goes back to 5th millennium BCE to 2nd millennium BC. And debate के बारे में इन्होंने मान लें, debate है, but debate है, there is no clarity. इसके 2-3 मुद्दे होते हैं. समझो,
Who talked about 1500 to 1000 BCE? Primarily Max Muller. And Max Muller is partly today controversial for his racist interpretation that we all know. And Max Muller's methodology of dating Rigveda is also very thumb rule. It cannot be proven, it is very rudimentary, but there is no better option. Kya kare? But he is going back to, or these people are going back to much past. तो ये 5th millennium to 2nd millennium में it starts overlapping with हड़प्पा. Again, यहाँ पे उन्होंने हड़प्पा की बात नहीं करी है. They have not connected this line with हड़प्पा, जो कि previous chapter में था. But there is clear point here कि somehow Rigveda and हड़प्पा were contemporary. If yes, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या वो सेम लोग थे? क्या नेबर्स थे? या अलग अलग जगह पे रहते थे? तो what was the relationship between Vedic people and हड़प्पन people? इसके बारे में किताब पर्पसफुली वेग तो है, बट असर्शंस कि वैदिक पीपल आर मच ओल्डर थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है. इट डो टेल्स वेरी वेल विद देम कॉलिंग इट एज इंडस सरस्वती इन द अर्लियर चैप्टर. चलो, ये एक इशू हुआ. उसमें दूसरा इशू है, इफ यू गो ऑन पेज नंबर 105, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. On the first page of this chapter 7, 105, they have mentioned the second point in big questions. एक सेक्शन में big questions, second point. What new schools of thought emerged in India in the first millennium BCE? What are their core principles? So by schools of thought, they talk about Upanishads, Buddhism, Jainism, etc. But the idea is first millennium BCE. इसका मतलब क्या है? The pivot that was earlier around the 6th century BCE in Marxist books is now loosened up to a larger time span of first millennium BCE. Don't focus on only one century. Don't focus on Buddhism and Jainism as something very unique. Rather, just extend the time frame and think of entire zeitgeist, entire cultural intellectual movement of these few centuries, जिसमें उपनिषद भी आते हैं, बुद्धिज़्म भी आता है, जैनिज़्म भी आता है, और कई सारे बाकी सेक्ट्स आते हैं, कई सारे बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं. तो उसमें वो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं that Buddhism and Jainism are part of the continuity of the process of thought which was started already by Upanishads. हर एक के अंदर differences है, conflict भी है, but the focus is not on conflict, it is on reconciliation. A Marxist would focus on conflict कि Buddhism was a social revolt against Upanishadic and Vedic religion. Now they are saying कि भाई Vedic rituals तो ठीक है, पुरानी बात हो गई, but some kind of change is already visible since the beginning of first millennium is that there are emergence of Upanishadic thought. और उसी प्रोसेस में कई सारे स्कूल्स आए, कई सारे थिंकर्स आए, जिसमें we have गौतम बुद्धा भी और वर्धमान महावीर भी, and they are also unique, they are also very successful, very strong, but वो एक प्रोसेस का पार्ट थे. So focus less on conflict, focus more on conciliation. This is a typical right wing thing. और वो उन्होंने आगे भी प्रूव किया है when they talk about the commonality of principles. There is a point there that they talk of, for example, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, interconnectedness, धर्म, कर्म, rebirth, ignorance तो कैसे दूर किया जाए, how to remove avidya, etc. These things are same. These common concerns, they may different thinkers came with different ideas, but concerns are same. The debates are in the same cultural context. तो उन्होंने इस चैप्टर के एंड में एक बड़ा सा पिक्चर भी दिया हुआ है that we have a trunk, a big trunk of a banyan tree. उसके कई सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं. उपनिषद भी आया है, बुद्धिज्म भी आया है, जैनिज्म भी आया है. तो फोकस ऑन देम बीइंग कमिंग फ्रॉम सेम रूट, फोकस ऑन रिकन्सिलिएशन, फोकस ऑन कल्चरल रूटेडनेस, ये उनका फंड है. तो ये थोड़ा सा राइट विंग एजेंडा है. एंड यहाँ पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है कि बताओ बुद्धिज्म इज अ चाइल्ड ऑफ उपनिषद डिबेट. तो बुद्धिज्म इन सम वे वेंट अगेंस्ट वैदिक थॉट, इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट इट कंटिन्यूड इन द सेम फ्रेमवर्क. इफ यू रीड फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी किताब है पूरी प्रिंसिपल उपनिषदास के ऊपर, वहाँ भी उन्होंने वही बात करी, द एथिकल कॉन्टेक्स्ट, द डिबेट ऑफ आत्मन ब्रह्मन, ये सब रीबर्थ, कर्मा, धर्मा, ये कॉन्टेक्स्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड था उपनिषदों में. बुद्धा ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टांस लिया जो थोड़ा रेडिकल था, थोड़ी कंटिन्यूटी थी. तो यहाँ पे इट इज़ द स्टांस टेकन ओवर हियर इज़ नॉट अनसाइंटिफिक और रॉन्ग, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा राइट विंग एजेंडा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है.
यहाँ पे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स. पहली बात तो, as I said, the focus is on reconciliation and not on conflict. Second baat, they have not gone into the social economic context. Maybe they want to go into the social economic context of 6th century BC in later grades. इसलिए यहाँ पे कमेंट देना मुश्किल होगा. The focus in this part is more on ideas. तीसरी बात, they are not calling Buddhism, Jainism as religions. The word that they have used is school of thought. और वो टेक्निकली सही भी है. That दिस वर मार्ग, बुद्धा भी खुद को बुद्ध मार्ग नाम से वहाँ पे यूज़ किया है, एंड नॉट कि मैं कोई नया रिलीजन क्रिएट कर रहा हूँ. वी नो रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म. धर्म अलग है, रिलीजन अलग है. तो धर्म, पंथ, सेक्ट, किसको रिलीजन कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए. सो दिस गोज टू द वेरी हार्ट ऑफ द डिबेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. राइट, वी नो दैट डिबेट, बट दिस डिबेट इज समवॉट indirectly connected by the choice of the term school of thought and not using the term religion. ठीक है, मैं दो चीज़ें यहाँ पे और मेंशन करूँगा. There is also a very oblique reference to Astic schools of thought. Not only Nastic like Buddhism, Jainism and Charavak, but also Astic, Yoga, Vaisheshika, Sankhya, etc. But the reference to Yoga, Vaisheshika कहाँ पे आता? Look at the location. It is also very interesting. That reference comes before mentioning Buddhism. Is it not interesting? Because if you read Rumila Thapad or any other Marxist historian, when do they mention this Astic schools of thought? Generally in Gupta era. अब ये mention कर रहे हैं in era of Buddha, so 1000 साल पहले. So we know as a matter of fact कि ये कोई clarity है किसी को नहीं, because dates available नहीं है. And we also know as a matter of fact that different schools of thought emerged by debating each other, by referencing each other in the atmosphere of very competitive idea. तो बुद्धिज्म भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं. दे मे बी कंटेम्पररी, दे मे बी पैरेलल. तो ना रुमिला थापड़ गलत है, ना यहाँ पे एनसीईआरटी गलत है. ये तो चॉइस ऑफ हिस्टोरियन है किसको कहाँ पे रखना है. बट बाय मेंशनिंग योगा एंड अदर स्कूल्स बिफोर बुद्धा, अगेन सम अटेम्प्ट इज टू टॉक अबाउट कि ये भी इतना ही पुराना है और ये भी उनको एक सब कॉन्शियस लेवल पे वो पॉइंट बताना है. फैक्चुअली इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट्स अ चॉइस ऑफ बोथ साइड्स. एनीवे, सो दिस आर द 2 पॉइंट्स. एक फनी एक्टिविटी भी यहाँ पे दी एट द एंड ऑफ चैप्टर. उन्होंने क्लासरूम के बच्चों को कहा कि भाई 1% शुड बिकम यमा, अदर शुड बिकम नचिकेतास एंड आस्क क्वेश्चंस. इट्स अ फनी वे, बट ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर. देन वी शैल गो to the next chapter, and that is unity in diversity or many in the one. In the beginning you have the quotes by Tagore and Aurobindo. ये chapter बहुत ही ingenious है. It focuses on cultural unity, and यहाँ पे we know unity in diversity. So generally unity focus is by right wing, diversity focus is by left wing. दोनों को ही मानते हैं, बस emphasis का फर्क है. So, 5 aspects are picked up in this chapter to talk about unity in diversity: food, textile, festivals, epics, and cultural arts. In these 5, food, textile, and festivals take first few pages, and they are detailed beautifully with beautiful maps and photos. कोई doubt ही नहीं. Classical arts के बारे में कहा है कि हम किसी और किताब में बताएंगे. That's a different thing. बचता है एक epics. Epics gets lots of pages. And यहाँ पे the idea is that how epics act as unifier of India. So यहाँ पे they talk of Panchatantra, Ramayana and Mahabharata. Epics, how do they connect India? So you have morals of the epics, वो कितने अच्छे हैं. या फिर we have some idea of the Tamil versions. Hundreds of Tamil Ramayana Mahabharatas exist. ये mention किया है. We have tribal versions of epics. We have northeastern versions of epics. So somewhere it indirectly talks about why do we have to focus on Aryan-Dravidian conflict? Even in Tamil language, since ancient time, we have some versions of epics already, Ramayana, Mahabharata. At the same time, the debate that exists in socio-anthropology, कि भाई ट्राइबल एंड हिंदुज़म में क्या कनेक्शन है, ट्राइबल्स हिंदू है कि नहीं है, तो उसको भी उन्होंने इंडायरेक्टली आंसर किया है कि देखो वी हैव वेरियस ट्राइबल वर्जन्स ऑफ रामायण महाभारत. तो why to focus on differences, focus on what unites us. यहाँ भी वही बात है
focus on conciliation, focus on unity, and less on something which divides us. So finally, they have used the quote. Look, I would read the quote by a very noted anthropologist K.S. Singh on page number 135. They mention the anthropologist K.S. Singh directed the People of India project we referred to earlier. In the case of Mahabharata, he has observed, there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandavas did not visit according to the folklore. जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ की जो folklore होगी, उस folklore में बात होगी पांडव यहाँ पे आए थे वनवास में. Doesn't that connect India culturally? So cultural unity through epics is mentioned in lot of collaboration across India amongst tribals in South India and Northeast India. The chapter concludes with this line in the end. We should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment, but never loses sight of the underlying unity which nourishes that diversity. So focus is on unity more. It's a typical thing. तो पहली बात इस चैप्टर की खास है that epics are used to show the cultural unity with diversity. Secondly, unity is more important focus than diversity. Thirdly, the examples that they have used from folk culture and from tribal culture etc. वहाँ पे they have very ingeniously tried to appropriate subaltern perspective. बस ये नहीं है कि Hinduism, Buddhism comes and absorbs tribal culture. Rather, both are affecting each other. ये both affecting each other में there is cultural osmosis. There is no dichotomy. There is harmony. There is no dominance and exploitation. So dominance exploitation का narrative इस पे नहीं है. There is narrative of give and take and mutual enrichment. So there is a fine balance between both subaltern and elite. ये किताब का इस चैप्टर का context है. So at the minimal, इस सबको हम भूल भी जाए, at the minimal there is an attempt of national integration which in itself is a good cause. जैसे कि they would talk of languages. Look at the languages and quotes. They come from every part of India. There is also a very much mainstreaming of Northeast India. Many characters here, they come from Northeast like Mizoram or Assam etc. Sometimes you will see that names of local religions there like Doni Polo. Doni Polo is, I was pleasantly surprised to find the mention of Doni Polo in NCERT. So Northeast को mainstream करना हो, संगम literature, तमिल लैंग्वेज की बात करनी हो, वेरियस रीजनल ट्राइबल एंड फोक कल्चर की बात करनी हो, तो द एग्जाम्पल्स दे हैव पिक्ड अप आर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड दे हैव ट्राइड टू शो यूनिटी मोर देन अदर थिंग. तो ये एक तरीका है विच इज़ जहाँ पे आप खड़े रहते हो राइट लेफ्ट जैसे भी हो. आई पर्सनली हैव नो क्वारल विथ दिस इशू. आई एम पर्सनली विथ ओके, ये तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इन अवर सिलेबस in GS1 we have a topic unity and diversity. This is the right approach to take in our answer writing also. Now come to the next point, point number 7. In point number 7, you have the issue of local self-government. In the polity section, you have in the same book, Polity and Governance Economy also, in polity section, when they talk of local self-government, only one small section is there on Arthashastra. They have talked of urban government, rural government, etc. But at only one place, Arthashastra, they have not gone into the debate of whether India is mother of democracy. The debate जो G20 से चल रहा है इंडिया में, and जो उससे भी कई 100 साल पुराना debate है, that debate is not touched upon here. They don't talk of anything. So I guess either they are not interested, or if at all they are interested, अगली किताब में आएगा अगले साल. But in this book, when they talk of local self-government, there is only stray reference to Arthashastra. Otherwise, there is not much reference to India's culture as such. Lekin there is a huge amount of focus on the values. And यहाँ पे बातें बड़ी interesting हो जाती. For example, look at the family system. When they talk of local government, they focus on family first. The family values of dana, seva and tyag are important. They talk of joint family, जो अब धीरे धीरे लगभग खत्म होने के कगार पे है इंडिया में. They take example one from Kerala, one from Meghalaya, and talk of joint family system and focus on dana, seva. If you go by the sociological perspective, the family as a unit is both useful, helping, and functionally अगर बात करूँ मैं, at the same time exploitative.
बट यहाँ पे जब फैमिली वैल्यूज की बात होती है, ओनली गुड वैल्यूज, दान सेवा त्याग. द सेकंड थिंग इज फोकस ऑन कम्युनिटी. And third thing, focus on local government more than national government. तो family, community and focus on local government, ये typical, if I use American Republican idea, तो American Republican idea में ये right wing कहलाया जाएगा, कोई doubt ही नहीं है. And if you go to economy section, in the economy section, again they talk of non-economic activities. There also, why do we engage in non-economic activities? Because there is again seva and idea of community participation. Same cultural values of family and community are also visible in economy section. तो यहाँ भी in polity and economy you will see that there is some kind of, in American Republican sense, idea of local community जो right wing कही जाती है, doubt ही नहीं. And the last point, the eighth आरोप that I have is about service sector. In service sector of economy, they have given 3-4 pages on सरदार पटेल, और rather I would say अमूल. अमूल की पूरी कहानी है, अ डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट, और बहुत अच्छी लिखी है, 4 बंदे में लिखी है. बट हियर द सेम स्टोरी ऑफ अमूल कैन बी टोल्ड इन डिफरेंट वे इफ यू आर राइट विंग एंड डिफरेंट वे लेफ्ट विंग. इन द केस ऑफ राइट विंग, फोटो लगा है सरदार पटेल साहब, जो कि सही फोटो है. देयर इज ऑल्सो, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, a mention of Tribhuvan Das Patel, and there is in one photo Tribhuvan Das Patel ji khade hai with Varghese Kurian. Generally Tribhuvan Das Patel is sidelined in the story, but unka naam aana chahiye. He deserves the mention and he has rightly got it after long time. जब मैंने किताब पढ़ी थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम वाली, तो उसमें बहुत अच्छी प्रशंसा करी है वर्गीस कुरियन साहब ने ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, बट समहाउ त्रिभुवन दास पटेल का नाम आता नहीं था, तो यहाँ पे आया हुआ है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट अगर आप लेफ्ट विंग होते तो आप इस कहानी में क्या लिखते? अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री एंड टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, यू वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कि भाई देयर इज ऑपरेशन ऑन कास्ट लाइन्स, there is operation on gender lines, and a moneylender comes, a merchant comes and loots common people, exploits common people, poor people. So caste, gender and class, ये 3 एंगल आप लेके आते, and to make it more relevant and relatable to perhaps some people, मंथन मूवी जो अच्छी मूवी है, गिरीश कर्नाड की, स्मिता पाटिल की बहुत बढ़िया मूवी है, उसका पोस्टर लगा देते. वो गलत तो नहीं है, बात फ़र्क है एम्फेसिस का. So यहाँ पे they have not done that. They have not gone to caste, class, gender issues. They have gone to technological, personality and economic transformation issues, जो अपने आप में एक अलग नैरेटिव, वो नया नहीं है बट अलग नैरेटिव है. What is the actual reality? Both of them are true. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. So where do we stand at the end of this 8 points? Is it a right wing book or left wing book? पहले मैं आपको बता दूं, before the final judgment, the book also has a lot of directly and indirectly modern values to impart. Recently in news, Kerala government के टेक्स्ट बुक्स बहुत नाम आ रहा है for them being specifically gender sensitive. The same thing, perhaps not to that extent, but is already visible in NCERT also. Here also the attempt is to break gender stereotypes, जो कि काफ़ी welcoming idea है. For example, in the rock painting, the Mesolithic era rock painting, the mention is there of women, कि कैसे उन्होंने काम किया होगा, and that mention goes beyond the typical gender rules. We have in Vedic era women seers, rishikas, composing Vedic hymns. We have the mention of women mountain climbers, 2 of them. We have in one photo a man is cutting vegetables in the kitchen. Is it not reversal of gender stereotypes? एक आदमी सब्जी काट रहा है, दूसरा आदमी सब्जी खरीद रहा है. Generally in the old books ये काम औरतें करती थी. तो there is an attempt to break the gender stereotypes even here also. We have a transgender being elected. Transgender being elected as Sarpanch. A tribal woman being elected as Sarpanch. And when it comes to unpaid activities, non-economic activities, it is shown that both women and men get engaged in unpaid activities. So in a way, this book is a very good way of going beyond gender stereotypes and talking of neutral things. तो ये एक तरह से ये modern value system है. तो at least on this count, it is not going back to the past. तो यहाँ पे modernity है. तो
Chalo, my point is, if we have to summarize, where do we stand? I'll talk about two things. Firstly, this book actually is a fine balance between right and left. It tries to take neutral path, the centrist path as much as possible, except for the case of Indus Valley, Harappa, Sindhu Saraswati debate. वहाँ पे it is clearly right wing, but वो भी अब यूपीएससी ने मान लिया है, तो हम कहाँ अपोज कर पाएंगे? तो apart from that, rest of the book is a fine balance between right and left, no doubt. The second point I want to make, which is much more important for you, is that whether right wing or left wing, YouTube पे जितने वीडियो आए, अखबार में जितनी खबरें आए, it has nothing to do with us. UPSC preparation will not get affected either this way or that way, whatever kind of book is this. So please don't waste a lot of time in reading all the articles, howsoever enjoyable they will be. Your preparation style, the way you write answers, will not get affected by these narratives. You can still be the way you were. Thank you.